Hello everyone, welcome to you all to this channel Gyandut 2.0 initiated by College Education Rajasthan Jaipur. And I am Reena, Assistant Professor Department of English, College Education Government of Rajasthan, and the topic of our today's e-lecture is essay What I Require from Life. This essay is written by JBS Heldon. Dear students, this essay is in the syllabus of BA Part 1 student, and indeed it is a very important essay. Name What I Require from Life. So, before we begin this essay, just have a look on the introduction to the author. This is the introduction of the author. The essay What I Require from Life, written by J.B.S. Heldon, and the full name of the author is John Burden Sanderson Heldon. The lifespan of J.B.S. Heldon is 1892 to 1964, and he was born in Oxford and educated at Eton New College, Oxford. And he had his university degree in classics. J.B.S. Heldon had his university degree in classics, not in science, but he worked much in the field of science, but he had his university degree in classics. And he began his scientific research in 1910 and worked in the field of human psychology, genetics, and mathematics. Sorry. For his work on genetics and evolution, he was awarded the Darwin Medal. He was awarded the Darwin Medal for his work on genetics and evolution, and the award by the Royal Society in 1952. And beside strictly scientific works, he wrote a number of popular books, including children's stories also. And he considered that a scientist should have to render science intelligible and to ordinary people. And he also underlined the constructive role of science in man's struggle for peace and prosperity. JBS Heldon also in favor of Marxism also. He was a social thinker, and he had worked for a number of years as an editor of the Daily Worker, the newspaper, the Daily Worker. And these are his famous works like Science and Human Life, Causes of Evolution, Keeping Cool, and the other essays. So, this is the short introduction of the author J.B.S. Heldon, and he wrote the essay What I Require from Life. It includes in our syllabus also, our UG syllabus. BA part for students has this essay What I Require from Life in unit first. So here the outline of the essay. जो आज का हमारा essay है What I Require from Life. JBS हेल्डन ने यहाँ पर अपने व्यूज बताए हैं कि किस तरीके से एक लाइफ में JBS हेल्डन को क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मीन्स वो क्या चाहते हैं. उन्होंने एक सोशलिस्टिक उनके जो बिलीफ है, जो सोशलिस्टिक उनका विजन है, वो हमें यहाँ इस ऐसे में देखने को मिलेगा. सो ये भी थोड़ा लेंदी ऐसे है, 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इस ऐसे को पूरा डिस्कस करेंगे. सो दीज आर दी आउटलाइन ऑफ द ऐसे.
कई बार हमें इस ऐसे में से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू रिक्वायर फ्रॉम लाइफ एट इज स्टेज ऑफ योर कॉलेज एजुकेशन। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप एक कॉलेज एजुकेशन जो आप ले रहे हैं, इस स्टेज पर आप लाइफ से क्या आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। और इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन के। What are the four things held in regards as general human needs and what is extra that he demands for himself? यानी इस ऐसे में हमें जनरल ह्यूमन नीड्स और जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, एसेंशियल नीड्स, उनके अलावा खुद जो राइटर हैं जेबीएस हेल्डन, इनकी पर्सनल नीड्स भी वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वो खुद अपने पर्सनल नीड्स और डिजायर्स भी यहाँ पर बताएंगे। और नेक्स्ट फिर हमें इस ऐसे में पढ़ने को मिलेगा द विजन ऑफ जेबीएस हेल्डन। जेबीएस हेल्डन ने जो विजन उन्होंने देखा डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में किस तरीके से डेमोक्रेसी हम ला सकते हैं, इसके बारे में भी वो इस ऐसे में हमसे डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है, जेबीएस हेल्डन खुद के पर्सनल डिजायर्स भी यहाँ पर बताते हैं, और पर्सनल डिजायर्स ऑल ओवर द लाइफ तो वो डिस्कस कर ही रहे हैं। उसके अलावा वो जो है पर्सनल डिजायर इज अबाउट हिज डेथ, डेथ के बारे में भी उनके पर्सनल व्यूज हैं कि वो किस तरीके की डेथ चाहेंगे अगर उनसे पूछा जाए तो। एंड ये जो है हमारा पूरा ऐसे और उसकी आउटलाइन है, what I require from life। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि what does जेबीएस हेल्डन require from life and how much he want to live and die। तो पूरा जो ऐसे है वो ऑल ओवर हमें पॉइंट टू द पॉइंट, जो यहाँ हम आउटलाइन ऑफ द ऐसे जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें इस पूरे ऐसे को डिस्क्रिप्टिव आंसर तैयार करना होगा, और पूरा थोरो स्टडी करके आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज ऐसे। वन बाय वन हम जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ, द ऐसे रिटन बाय जेबीएस हेल्डन। इन दिस ऐसे he reveals his socialistic strong convictions. Socialistic strong convictions means his beliefs, his thoughts, is his socialistic beliefs and his socialistic thoughts. And he foresees a vision of democracy. He foresees a vision of democracy also. Democracy in industry also. And democracy in industry means what does he mean by democracy in industry? Democracy in industry means every healthy man and woman engaged in his or her production work, means हर व्यक्ति अपने प्रोडक्शन वर्क में इंगेज्ड हो। सोसाइटी का हर हेल्दी पर्सन, आइदर इट इज मेन और विमेन, ही इज मेन और विमेन, कोई भी हो, आदमी हो या औरत हो, वो किसी न किसी ऑक्यूपेशन में, प्रोडक्शन वर्क में इंडल्ज होना चाहिए। एंड डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री मीन्स ही और शी शुड बी फ्री टू चूज हिज और हर पर्पस एंड मोड ऑफ लाइफ। और हर व्यक्ति, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, हर महिला और पुरुष को जो है अपना पर्पस और मोड ऑफ लाइफ चूज करने का अधिकार हो। तो ये यहाँ पे विजन इन्होंने दिया, एक 4C जेबीएस हेल्डन ने यहाँ पे हमें एक विजन दिया है डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री का। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द एसे द राइटर मेंशंस द बेसिक नीड्स ऑफ मैन। सबसे पहले बेसिक नीड्स जो है वो बताएंगे, एंड आफ्टर दैट ही मेंशंस द जनरल ह्यूमन नीड्स। एंड नाउ first of all, at the beginning of the essay, JBS Heldon discusses about the general human needs and basic human needs.
He differentiate here the general human needs and basic human needs. General human needs, as we are daily performing, like food, getting food, eating food, drinking water, clothing, housing, and so and so. But he differentiate the general human needs to the basic human needs. So, what are the general human needs and basic human needs according to the writer? According to the writer, the basic needs of everyone are food, water, clothing, housing, and the writer points out about the four general human needs, which are these are the above: food, clothing, water, housing, मीन्स रोटी कपड़ा और मकान, जो हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये तो एक तरीके से क्या है, जनरल ह्यूमन नीड है। और यहाँ राइटर ने बेसिक ह्यूमन नीड्स भी बताए हैं। तो बेसिक ह्यूमन नीड क्या है? ही मेंशंस अबाउट द फोर जनरल ह्यूमन नीड, फोर बेसिक ह्यूमन नीड एंड जनरल ह्यूमन नीड आर hard work with decent wages. The first general human need is hard work with decent wages. Second is freedom. Third is health. And fourth is friendship. So, except the food, water, clothing, and housing, like basic human needs, here he mentions the general human needs also. He mentions here the four general human need. First is hard work with decent wage, second is freedom, third is health, and fourth is friendship. So these are the four general human needs according to the writer. And above, these general human needs are equally important in human life like the basic needs. बेसिक नीड की तरह ही ये भी जनरल ह्यूमन नीड भी सबके लिए जरूरी है। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल ह्यूमन नीड्स आर एज we are going to discuss, like the first general human need is hard work with decent wages. So what is mean by hard work with decent wages? Here writer points out that the first general human need is hard work with decent wages, and the hard work should be interesting and fruitful. Hard work should be interesting and fruitful, and this hard work should result in decent income also. Means we should get good income after hard work. We should get good income after hard work. So this is the first general need discusses by the writer as hard work with decent wages. And writer also want to do work hard, and here he shares his personal opinion that he wants to do work hard, but he doesn't want mountaineering, motor racing. Means writer also wants to do work hard, but he don't want to do the hard works like the mountaineering and the motor racing, etc. Instead of it, he wants to do the adventurous acts, and he wants to become a war correspondent, and he wants to do work of a story writer or a giving the political speech, etc. And further, he says if he gets time from his main work of a psychologist, because he also he was also working in a field of science, so he says that if he gets some extra time except his work as a psychologist, he wants to do above all works as his remaining time. Essayist also wants to do the works. यहाँ जो राइटर हैं वो कहते हैं कि वो खुद भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं, लेकिन हार्ड वर्क मोटर रेसिंग या माउंटेनियरिंग ऐसा हार्ड वर्क नहीं करना। उन्हें क्या हार्ड वर्क करना है कि यदि उनके जो एज ए फिजियोलॉजिस्ट के बाद उन्हें टाइम मिलता है तो वो क्या करना चाहेंगे, वार करस्पॉन्डेंट बनना चाहेंगे, पॉलिटिकल स्पीचेस देना चाहेंगे, स्टोरी राइटिंग करना चाहेंगे। सो हियर
We see that JBS Halden also is in favor of hard work and decent wages. Next, he mentions the second general human need as freedom. What do he mean by freedom here? And writer mentions the second general need is freedom means here the writer wants to say that he needs some more freedom in speech. Here he focuses on the freedom of speech so that he could easily express his thoughts. Here he is in favor of freedom of speech so that he could express his thoughts easily, and he could easily criticize the weaknesses of the society, and he could easily tell about the shortcomings of the medicine, of the newspaper and wine, etc. And his freedom of speech can be free from the fear of label, fear of laws means here totally वो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता है कि उसे अपने अधिकार क्षेत्र में बोलने को मौका मिले और सोसाइटी में कहीं भी कुछ गलत होता है तो उसके बारे में बोलने का उसे आजादी हो. And the third and next general human need is health. What kind of health he discusses here? The third general human need is health. Health is necessary to do work hard because health is necessary to do work hard, and health keeps everyone away from the dangerous disease, and health is necessary to enjoy the entertainments of life means here the author says that who is healthy he can enjoy his life better, so he requires the third general human need as health. And next and fourth one is the friendship. What is friendship? So let's see that what is friendship. The last and fourth general human need according to the JBS Haldun is friendship. And according to the writer, friendship is must for a man and a woman. Friendship is must for men and women because a man is a social animal and he needs to communicate his feelings to the others. यहाँ जेबीएस हेल्डन ये फोर्स करते हैं कि हर किसी के लिए फ्रेंडशिप भी जरूरी है बिकॉज वी आर सोशल एनिमल एंड वी जस्ट वांट टू someone to express our feelings, to express our thoughts. So all we are need. Uh, Next, he says that he needs friendship of equal rank and status. He stresses upon the friendship of equal the people of the equal rank and equal status, so that both of them could criticize each other. And the author gives his opinion that in the friendship of equal rank and equal status, there is no place for ego and proud. वो क्या यहाँ पे फेवर करते हैं कि हमें फ्रेंडशिप कैसे रखनी चाहिए, इक्वल स्टेटस और इक्वल जो रैंक है हमारे समकक्ष हमारे बराबरी के ही रैंक और स्टेटस की फ्रेंडशिप रखनी चाहिए बिकॉज वी कैन क्रिटिसाइज ईच अदर वेरी मच. हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज कर पाएंगे एंड बिटवीन द फ्रेंडशिप ऑफ इक्वल रैंक्स पीपल देयर इज नो प्लेस फॉर प्राउड एंड ईगो. अगर हम इक्वल रैंक की फ्रेंडशिप रखेंगे, इक्वल स्टेटस के लोगों से फ्रेंडशिप रखेंगे तो वहां पर ईगो या प्राउड का भी कोई प्लेस नहीं होता है. सो ही सजेस्ट दैट वी शुड डू फ्रेंडशिप with the person of equal rank and status. So these are the four general human needs according to JBS Haldane. And after discusses the general human needs and basic human needs, he comes to the personal needs and desires of the writer. खुद जेबीएस हेल्डन अपने पर्सनल नीड्स और अपने पर्सनल डिजायर्स भी यहाँ पर बताते हैं कि वो अपने लाइफ में स्वयं के लिए क्या चाहते हैं, खुद के लिए क्या चाहते हैं. सो हियर he points out the personal needs and desires like after the basic needs of and a general human need,
the writer points out the personal needs and desires, such as the first, his personal need and desire is the writer needs a life of adventure. He needs a life of adventure because May's life becomes dull and monotonous without the adventure. Here, he stresses upon the life of adventure, but he does not want adventure like mountaineering, motor racing. Instead of that, he wants to participate in wars and revolution, and further, as an adventure, he can try some experiments in his field of biological science. वो खुद जो है फिजियोलॉजिस्ट हैं, तो वो बायोलॉजिकल साइंस में भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहेंगे, वार और रेवोल्यूशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। इस तरीके की उनको एडवेंचरस लाइफ चाहिए, न कि मोटर रेसिंग, कार रेसिंग और जो पर्वतारोही, माउंटेनियरिंग, ऐसा उनको एडवेंचर नहीं चाहिए। इन सब के बजाय उनको कैसी एडवेंचरस लाइफ चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके वार्स में, रिवोल्यूशंस में, और उनके फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो है उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। नेक्स्ट, उनको और क्या चाहिए खुद के लिए? सो ही ऑल्सो डिजायर्स टू हैव अ गुड रूम फॉर हिमसेल्फ and some books to study. And if possible, he needs a garden, a bathing pool, a nearby beach. These are the much quite personal things he wants here. And next, he says he also wants that his new discoveries in biology should be used by the government and if they are fruitful to our society. और नेक्स्ट उनको क्या चाहिए खुद के लिए कि यदि उनके जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अच्छे हैं, तो वो चाहेंगे कि गवर्नमेंट शुड बी his experiments should be used by the government also if they are fruitful to our society. And his last personal desire जो है वो बाद में बताएंगे। एक ये उनका लाइफ के प्रति जो उनके डिजायर्स हैं, होल लाइफ वो क्या चाहते हैं वो यहाँ डिस्कस किया। नॉट ओनली फॉर द लाइफ, he has some personal desires for his death also. उन्होंने अपनी डेथ के लिए भी खुद पर्सनल डिजायर किया है, जो वो आगे इस ऐसे में डिस्कस करेंगे। एंड जेबीएस हेल्डन्स लास्ट पर्सनल डिजायर, उनका लास्ट पर्सनल डिजायर क्या है? इट इज ऑल अबाउट हिज डेथ, कि उन्हें मृत्यु भी कैसी चाहिए। और यहाँ पे वो बहुत ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस हैं, जिनको हम हिंदी में सुकरात पढ़ते हैं। तो सोक्रेटिस जो ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर है, उनका एग्जाम्पल देते हैं कि सोक्रेटिस को कितनी अच्छी मृत्यु प्राप्त हुई है। वो कहते हैं कि आदमी की सबसे अच्छी डेथ क्या होती है? जब वो उसके पूरे 5 सेंसेस वर्किंग कर रहे हों और टिल डेथ वो कंटिन्यू वर्किंग करने की कंडीशन में हो और मरते वक्त बिल्कुल फियरलेस और स्माइल ऑन हिज फेस हो। और ऐसी मृत्यु किसको मिली है? ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस को, जो एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है। और उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें मृत्यु के बारे में भी पूछा जाए, उनसे पर्सनल डिजायर अबाउट डेथ पूछा जाए, तो he just want to die like Socrates. So this is his last personal desire is about death. So here his last personal desire is about death, and he tells about the death of great Greek philosopher Socrates. He had very good health and he died at the age of 70. He died enjoying the all opportunities of life till his death. All opportunities of life till his death. And what are these opportunities? These opportunities are, first is continue to have all our senses working. Continue to have all our senses working. And the second opportunity of till to his death is to continue working till death. And the third one is to die fearlessly with a smile on face. And here JBS Halden also desires the death like Socrates, and
He also wants to die enjoying all these three opportunities till to his death. These three opportunities are continue to have all our senses working and to continue working till death and to die fearlessly with a smile on face. और हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जो डेथ हो वो भी इन थ्री अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करते हुए हो. So he tells that he cannot be happy if others are unhappy. जो लास्ट उनका एक सोशलिस्टिक उनके व्यूज है यहाँ पे जेबीएस हेल्डन के. नेक्स्ट ही सेज दैट ही वांट्स टू सी एवरीबडी हैप्पी. जैसा उन्होंने 4C किया, क्या 4C किया उन्होंने? कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री. और डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री उन्होंने जो 4C किया है, ये विजन, उसका मेन पर्पस क्या है? बिकॉज ही कैन नॉट he says that he cannot be happy if others are unhappy because the writer was greatly socialist. So he wants to democracy in industry. So this is his vision, that democracy in industry. Just have a look. The democracy in industry. What is the concept of democracy in industry? Discussed by J.B.S. Heldon as in this essay, What I Require from Life. Writer J.B.S. Heldon reveals his strong socialistic beliefs and he foresees a vision of democracy in industry. And where, what is democracy in industry? Where every healthy man and women engaged in production and have the opportunity of choosing their purpose of life or work. This is his vision of democracy in industry. Means democracy in industry means every healthy man and woman engaged in production and they have the opportunity of choosing their purpose of life and work also. And as we know, the writer is a socialist and he is, and in this essay he expresses his socialistic beliefs, his socialistic convictions. And democracy in industry means all healthy men and women working in industries enjoying the life. And first of all, the writer wants to all the healthy men and women have to work with decent wages. और वो नेक्स्ट क्या चाहते हैं? सबसे पहले कि एवरी हेल्दी मैन एंड वुमेन जो है वो उनके पास हार्ड वर्क हो, एंड हार्ड वर्क भी कैसा हो? हार्ड वर्क विद डिसेंट वेजेस. एंड दे शुड गेट वर्क टिल देयर सेंसेस आर वर्किंग. और जब तक उनके सेंसेस वर्किंग है तब तक उनको काम मिलता रहे. ये डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री का विजन है जो जेबीएस हेल्डन यहाँ पर देते हैं. एंड so that they are able to fulfill their own needs and they make their life better, and worker can able to do good for well-being of their friends also. And next, the writer says that the profit of industry should not only go to the capitalist capitalist means owner of the industries. यानी जो प्रॉफिट है कंपनी का वो सिर्फ उन पूंजीपति या जो ओनर है उस फैक्ट्री के या उस जो भी जहाँ उनका जो इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट सिर्फ मालिक को ही नहीं जाए बल्कि क्या होना चाहिए? बट द प्रॉफिट ऑल्सो गो टू द वर्कर्स इक्वली. जो प्रॉफिट है इंडस्ट्री का वो वर्कर्स में भी इक्वली जाना चाहिए. एंड फॉर गेटिंग equally profit, the workers should be given full opportunities and freedom to choose their work according to their wish, and they also should get opportunities to choose the conditions of their own work, and as the result of this their work would become interesting and untiring. And freedom in industry results in equal division of profit between the capitalist and the workers. And the author wants that there should not be any kind of exploitation of the workers in the industries. And all workers should be provided good housing and good medical facilities
and all workers should get enough facilities to fulfill their basic and general human needs. And next, the writer proves that he wants to democracy in industry and he is a real socialist. And at the end of this essay, he wants to reduce the class subjection and sex subjection in the industry. वो हर प्रकार के subjection को, चाहे वो class subjection हो industries में या sex subjection means महिला और पुरुष में जो कार्य में जो subjection होता है, भेदभाव होता है, उनका समाप्त, उनको end करना चाहता है लेखक. And the writer further adds that there should not be any class subjection or sex subjection in the industries, and he says that this type of subjection does not create a sense of equality and brotherhood. And the writer hopes that someday there must be the revolution in the industry and subjection must be ended. And he wants that capitalism must be rooted out and the power should be given to the workers to control the industry. And for this purpose, it is necessary to spread the education. So, all over the main point is when we are able to spread the education, we can make all the visions are possible. And only education gives the opportunity to aware oneself about our rights and about our life. And after reading this essay, we find that the writer gives his socialistic thinking for the welfare and well being of the workers. And this is the democracy in industry. And thus, the writer proves that he has a full faith in socialism and democracy. So, all this is all for today, dear students. And our today's essay, What I Require from Life, written by JBS Heldon. I hope all of you understood very well, and so be with us in this channel Gyandu 2.0, and indeed it is a very informative channel, and please be with us. Thank you. Thanks to you.